पहिला रोल साहेब पहिले कार्यक्रमाबद्दल सांगा। आज ब्ल्यू एनर्जीच्या वतीने भारतातला अतिशय आधुनिक आणि पहिला इलेक्ट्रिक ट्रक हा या ठिकाणी लॉन्च करण्यात आलेला आहे। या ट्रकमध्ये बॅटरी स्वॅपिंग टेक्नॉलॉजी आहे आणि अतिशय किफायतशीर किमतीत हा ट्रक उपलब्ध आहे। यामुळे आपलं जे काही कार्गो ट्रान्सपोर्टेशन आहे याच्यामध्ये आज जे प्रदूषण होतं ते प्रदूषण पूर्णपणे संपुष्टात येईल, आपलं परकीय चलन वाचेल आणि अतिशय एफिशियंट अशा प्रकारची सिस्टीम आपल्याला मिळेल। हा जो काही ट्रक या ठिकाणी तयार करण्यात आलेला आहे हा पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीचा ट्रक आहे आणि भारताच्या सगळ्या कंडिशन्सला ॲक्लिमेटाइज होईल, त्या कंडिशन्सला तो पुरेसा असेल अशा प्रकारचा ट्रक आहे। याच्यामध्ये बॅटरी चार्जही करता येते आणि बॅटरी रिप्लेसही करता येते। केवळ 5 मिनिटात म्हणजे 4.5 मिनिटांमध्ये बॅटरी रिप्लेस होते। आता पहिल्यांदा मुंबई पुणे कॉरिडॉर हा ते तयार करतायत, ज्याच्यावर बॅटरी स्वॅपिंगची व्यवस्था असेल, चार्जिंगची व्यवस्था असेल आणि ट्रक ड्रायव्हरनी त्या ठिकाणी ट्रक नेल्यानंतर स्वॅपिंग स्टेशनवर 4.5 मिनिटांमध्ये दुसरी बॅटरी त्या ठिकाणी लागेल आणि तो पुढे जाऊ शकेल। म्हणजे पेट्रोल किंवा डिझेल भरायला जेवढा वेळ लागतो त्यापेक्षा कमी वेळामध्ये त्या ठिकाणी नवीन बॅटरी त्याला लागेल, अशा प्रकारची ही व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आली आहे। 10,000 ट्रक्स आता या ठिकाणी निर्माण होणार आहेत आणि आता एक्सपान्शन करून 30,000 ट्रक्सपर्यंत जाण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे। यात सगळ्यात महत्वाचं आहे की आम्ही डावोसमध्ये MOU केला होता आणि अतिशय कमी वेळात फास्टेस्ट या ठिकाणी तो MOU प्रत्यक्षात उतरवण्याचं काम झालेलं आहे। मी असं म्हणेन की आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमध्ये ट्रकच्या क्षेत्रात एक क्रांती ही भारतामध्ये ब्ल्यू एनर्जी आणि SRने या ठिकाणी केली आहे। मी त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करतो। आज भारत की प्रगति में एक नई गति लगी है और भारत नित नए आयाम और नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत वोकल फॉर लोकल पर भी फोकस कर रहा, भारत मेक इन इंडिया पर भी फोकस कर रहा और भारत मेड इन इंडिया पर भी फोकस कर रहा। भारत अपना आत्मनिर्भर बन रहा। इसी क्रम में हम बहुत ही प्रसन्नता के साथ महाराष्ट्र की भूमि पर आए हैं, जहां पर EV ट्रक, जहां पर सौर ऊर्जा के द्वारा चलित एक ऐसा ट्रक जो अभी भारत में पहली बार आज लॉन्च हुआ है। SR ग्रुप में हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही आत्मीय, जिन्होंने पूरे देश के लिए बहुत कार्य किया, ऐसे श्री प्रशांत रुइया जी, श्री अंशुमन रुइया जी, श्री अनिरुद्ध जी, आप सबने मिलकर के जो प्लानिंग की, जो अभूतपूर्व उसकी डिजाइन की, जो एक नया फीचर लाए हैं, एक नई व्यवस्था के साथ लाए हैं, जिससे लोगों की, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए जेब खर्चा, प्रदूषण पर भी रोक लगेगा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जो लोग सोच पा रहे हैं कि एक बार ट्रक लेने के बाद बार बार डीजल कैसे डरवाएं, उसकी झंझट खत्म। तो ये अभूतपूर्व कार्य था, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ये ट्रक पूरे तरह से भारत के बनावट का है, मेक इन इंडिया है, इस बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भारत में नई नई गतियां पा रहा है और ये मेक इन इंडिया होना हम सबके लिए गौरव की बात है। जैसे टेस्ला का एक नया धूम है भारत में, मेक इन इंडिया में ये ब्लू एनर्जी का एक नया धूम मच रहा है। उस तरफ वो अपना धमाल मचा रहे हैं, भारत भी इस तरफ धमाल मचा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉन्चिंग केलंय आणि आता स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः हा ट्रक चालवत आहेत आणि हा ट्रक चालवून त्यांनी हा ट्रक ऑफिशियली लॉन्च केलाय। त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा धीरेंद्र शास्त्री जे होते